हाँ सीधा आज क्लास मत लगी पिला जे आज से जो 3टा बेले जो हुए सेटा नथिला त मु सोई पड़थिले एतरे बैटरी डाउन ने हां ये संके अच्छा प्रोग्राम सरीबा ऊपर हलानी आज रात रे घंटाडे करदले सरजो तो काल ठू प्रोग्राम करबा हला ओके सर मत एक्चुअली टाइम होनी ना माने एक तो से 2-3 दिन जो थिला जो से टाइम थिला तो से टाइम रे तो व्यस्त रह गेले से पड़े तो एबे खुलला परे टाइम हो लेखिया पे तो आज मोर सरी गलानी ओवर गलानी आ खाली ट्रैवल्स आ सर्चिंग टा खाली अछि तो आज रात रे सरजो काली हम प्रोग्राम करबा ठीक है ओके सर okay so in this session we will be learn to identify the features of queue implement the different types of queue apply queues to solve programming problem store and search data by using hashing right এই সেশনে আমি জানিবা কিউ आ पूर्व सेशन रे प्रीवियस क्लास रे हमें करथले स्टैक कोन तो स्टैक रो वीडियो टा मु पठेनी आज अपलोड कर देबी ठीक अछि तो स्टैक कोन केमिति तमरो इंसर्ट होतला केमिति तम डिलीट होतला सेमिति हमरो गोटे कांसेप्ट अछि क्यू तो क्यू रे हमें केमिति इंसर्ट करबा केमिति डिलीट करबा केमिति सर्च करबा देन हैशिंग ऊपर जानिबा हैशिंग फंक्शन ता एक्चुअली कोन हैशिंग एक्चुअली कोन जेन तमे बुक रो कंटेंट देखुछ राइट कंटेंट माने इंडेक्स नंबर देखुछ तो टॉपिक ता एति नंबर पेज रे अछि तो तमे पेज बाय पेज सर्च करबा अपेक्षा डायरेक्ट सेही नंबर पेज को गला पर सेही टॉपिक मिलबो दैट इज कॉल्ड हैशिंग राइट तो सेम स्ट्रक्चर भी आमे एठी प्रोग्राम रे करि परिबा ताकि जदि हमर डॉक्यूमेंटेशन अछि तो हैशिंग थ्रू रु मु डायरेक्टली सेही पॉइंट पाखु पहुंच परिबी जोटा कि पेज बाय पेज मु सर्च न करी कि मोर टाइम वेस्ट न करी मु डायरेक्टली एफिशिएंसी हिसाब रे मु सेही डाटा पाखरे जाकी अवेलेबल हे परिबी दैट इज कॉल्ड द हैशिंग consider a situation where you have to create an application with the following set of requirements. Application should serve the request of multiple users. At a time, only one request can be proceeded. The request which came first should be given priority. However, the rate at which the requests are received is much faster than the rate at which they are proceeded. Therefore, you need to store the request somewhere until they are proceed. How can you solve this problem? You can solve this problem by storing the request in such a manner so that they are retrieved in the order of their arrival. A data structure called queue store and retrieve that in the order of its arrival. Right? A queue is called the FIFO list, that is fast in fast out. Right? Fast in fast out मोर stack थिला last in fast out LIFO method but queue टा मोर FIFO method को सपोर्ट करे fast in fast out गोटे मिनट होल्ड करो इसीता हाँ भगवान हाँ नमस्कार अच्छा हो ठीक है हाँ ठीक ठीक है सॉरी सीधा तो क्यू तमर मेंशन हुए कोठी जेमति तमर बैंकिंग सेक्टर रे राइट आजिका डेट रे बैंकिंग रे आउ लाइन लगे कि छिड़ा हबा प्रोसीजर बहुत रेयर मिलछि राइट एबे बैंकिंग सेक्टर रे किंबा तमे जीवो जदि मास्टर कैंटीन जो माने बड़ पोस्ट ऑफिस जोड़ा अछि सेठी कि जीवो किंबा जे कोनसी तमर काउंटर एरिया को जीवो जदि तमर टोकन सिस्टम अछि राइट जी जेते जल्दी आसीबो सी सेते जल्दी टोकन करिवो टोकन कले कोन टीवी स्क्रीन रे माने धर 10 जण अछंती 10 जण सामने रे तमे 5th नंबर पोजीशन रे अछ 5th नंबर रे अछ तो टोकन टा कोन
माने जी जेते फास्ट रे आसी जी प्रथमे आसी ताकू प्रथमे सर्विस प्रोवाइड करा जाए तो से कॉन्सेप्ट होची तमरो क्यू आ जो सॉफ्टवेयर तुम जो टोकन करूछ टोकन कला माने सी कौन से गोटे लोकेशन रे सी तमरो इन्फॉर्मेशन टाकू माने तम रिक्वेस्ट टाकू स्टोर कर रखिछि जेते बेले तमरो रिक्वेस्ट अवेलेबल हबो एंड तम रिक्वेस्ट रो जेते बेले तमरो टाइम टा आसीबो से रिक्वेस्ट टाकू जनरेट करिवो से जो कॉन्सेप्ट जो सॉफ्टवेयर टा बना हिछि सेटा तमरो क्यू कॉन्सेप्ट थ्रू रु बना हिछि तमे ट्रेन टिकट रिजर्वेशन हो किंबा तमे मूवी टिकट रिजर्वेशन हो माने बुक करबा हो किंबा तमे इलेक्ट्रिक बिल ऑनलाइन पेमेंट करो ता पेमेंट हो किंबा ऑनलाइन रे कोनोसी बिल पेमेंट करूछ धर प्रोसेसिंग चलीची तो प्रोसेसिंग तमे दि तीनटा प्रोसेसिंग मार देछो तो जोटा प्रथमे माच सेटा प्रथमे एग्जीक्यूट हैला पर देन सेकंड प्रोसेसिंग को अवेलेबल कराइबो तो से सब कांसेप्ट होची तमरो क्यू माने विशेष करी तमर काउंटर मानकरे तमर अवेलेबल तमर जो कांसेप्ट यूज करा जाय सेटा होची क्यू माने फास्ट इन फास्ट आउट जे फास्ट आसीबो ताकू फास्ट सर्विस दिया जिवो जेंतु का कोआ जाय नि फास्ट कम फास्ट सर्विस तो सेमिति तमर फिफो तमर इंडिकेट करे क्लियर एंड इसिदा Yes, sir. queue is a list of element in which an element is inserted at one end and deleted from other end from of the queue stack रे कोन थला गोटे एंड से गोटे एंड रे तमे इंसर्ट भी करूथलो से गोटे एंड रे तमे डिलीट भी करूथलो बट क्यू रे गोटे एंड रे इंसर्ट करिवो आ गोटे एंड रे डिलीट करिवो तुमको माने गोटे पटे ही इंसर्ट आउ डिलीट करबा दरकार नै तार गोटे पटे तमे इंसर्ट करिवो आ गोटे पटे तमे डिलीट करिवो माने दुईटा को तमरो ओपन थाए बुझला एटा तमरो क्यू रो सपोज लिस्ट राइट तो element are inserted at the rear end and deleted from the front end queue रे element जदि insert होची से insert area टा को जाय rear and तम जोठी delete होची से delete area टा को जाय front तो queue रे दीटा variable रहबो गोटे होची rear आ गोटे front rear होची तमरो insert करबा front होची तमरो delete करबा एटा होची तमरो स्ट्रक्चर A queue is also known as a dash list, FIFO, fast in, fast out. The various operations implemented on a queue are insert and delete. जेमते stack रे थला stack रे तमरो insert out delete थला सेमते तमरो queue रे भी insert out delete भी अछि तमरो. Insert it refers to the addition of an item in the queue. Suppose you want to add an item F in the following queue. F मोरो insert हबो से queue भितरे since the item are inserted at the rear end therefore F is inserted after D मोरो insert the element जो जोठी होची सेटा कोठी rear end रे हबो तो rear टा मोरो कोठी अछि एबे D अछि D रे अछि तो F टा मोरो कोठी insert हबो after D right now F becomes the rear end बुझला इसिदा No, sir. Not the कंडा कल Arthritis agent. क्यू रे जेमती स्टैक रे तमरो टॉप बोली गोटे वेरिएबल थाए माने टॉप रे तमे इंसर्ट भी करिवो टॉप रे तमे डिलीट भी करिवो सेमिति क्यू रे दीटा पार्ट अछि गोटे अछि रेयर आ गोटे अछि फॉन्ट रेयर जोठी अछि सेठी तमे इंसर्ट करिवो फॉन्ट जोठी अछि सेठी तमे डिलीट करिवो तो एई केसेस कोन कहउतला जे मोर रेयर कोठी अछि डी रे अछि तो मते गोटे इंसर्ट करिवार अछि एफ बोली राइट सेटा कोठी हबो रेयर एंड रे Sir, बुझियली तो रेयर एंड जेता इंसर्ट करछो सेटा आफ्टर डी तो हबो ना बुझला ना मो एटा भाबी देली कि जे आगो माने एपड साइड रो कंपे हला नि एपड साइड रो कंपे हला रेयर जोठी अछि सेटु इंसर्ट हबो delete it refers to the deletion on an item from the queue so delete कोठी हबो front end side रो so since the item are deleted from the front end therefore item B is removed from the queue right तो फॉन्ट जोठी अछि सेठु डिलीट हबो तो एबे डिलीट हबो कोटा प्रथमे बी डिलीट हबो कारण फॉन्ट टा मोर बी रे आसानी तो बी रिलीज हे गेला मोर
देन फॉन्ट मोर कहा को असाइन हबो ए को असाइन हबो देन ए को रिलीज करिवो से देन मोर सिक्वेंशियली फॉन्ट जोडी जोडी अछि सेठी तमर रिलीज हे जे राइट the queue are the data structure in which data can be added at one end called dash and data and delete from the other end called dash कहले एटा कोन हबो से जोटा माने ऐड होची सेटा होची रेयर आ जोटा डिलीट हे जाची सेटा होची फॉन्ट good very good rare of font problem statement consider a scenario of a bank when the customer visit the counter a request entry is made and the customer is given a request number after receiving request number a customer has to wait for some time the customer request need to be queued into the system by proceed on the basis of their arrival you need to implement an appropriate data structure data storage mechanism of store this request in the system जोटा कि मु तुमको एग्जांपल टा कहली बैंक सेक्टर रे जेमति तमे जाउछ जो रिक्वेस्ट टा पठोज एबे तो सब टोकन सिस्टम हे गलानी तमे पासबुक अपडेट करो टोकन मशीन भी हे गलानी टोकन सिस्टम अछि तमे कैश डिपॉजिट करबो टोकन या फिर अलगा किछि इंक्वायरी करिया पेन जिवो टोकन या फिर तमे चेक डिपॉजिट करबो टोकन सब टोकन सिस्टम हे गलानी राइट एबे टोकन सिस्टम जदि हे गलानी इट मींस कोन कि तुमको जेते जल्दी गले तमे सेते जल्दी टोकन करिवो और सेते जल्दी तुमको सर्विस प्रोवाइड पई तमरो नंबर तमरो एक्सेप्ट से माने करिवे तो ए कांसेप्ट को आजे तमरो क्यू कांसेप्ट माने फास्ट इन फास्ट आउट फास्ट कम फास्ट सर्विस मेडिकल सेक्टर भी तमरो ए कांसेप्ट को यूज करा जाय जेमते तमरो धर सम हॉस्पिटल हो टोकन सिस्टम होची एम्स हॉस्पिटल हो किम्स हॉस्पिटल हो तो ए सब से माने बड़ बड़ जो ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल मानन करे हम टोकन सिस्टम करा जाय सेति पय देखियो राती 4टा राती 3टा राती 2टा रो लोक लाइन रे छिड़ाई थियो टोकन करिया तो जेते जल्दी टोकन करिवे जेते प्रथमे टोकन करिवे सेते जल्दी तांको सर्विस टा प्रोवाइड कर ए जो कांसेप्ट जो आईडिया टा जो आसी छै एटा क्यू कांसेप्ट रो आईडिया टा आसी क्लियर यस सर how can you solve this problem you can solve this problem by implementing a queue let us implement a queue using an array that store this request number in the order of their arrival to keep track of the rare and font position you need to declare two integer variable that is rare and font मु जेम तुमको कहली क्यू रे दीटा वेरिएबल डिक्लेयर करिया पड़िबो गोटो होची rare आ गोटो होची तमरो font बट तमर डाटा स्ट्रक्चर रे तमरो सॉरी स्टैक रे कोन थला गोटी वेरिएबल डिक्लेयर करथला टॉप बट एठी दीटा माने गोटे पटे इंसर्ट हबो आ गोटे पटे डिलीट हबो सेत पई जो पटे इंसर्ट हबो ताकू गोटे वेरिएबल दरकार जो पटे डिलीट हबो ताकू गोटे वेरिएबल दरकार जो पटे इंसर्ट हबो ताकू रेयर को आ जाय एंड जोटा जो पटे डिलीट हबो ताकू फॉन्ट को आ जाय सेत पई दीटा वेरिएबल तमु डिक्लेयर करबा को पड़िबो राइट इफ द क्यू इज एम्प्टी रेयर एंड फॉन्ट आर सेट टू -1 जदि मोर क्यू मोर एम्प्टी रहिबो ताले रेयर आ फॉन्ट मोर कोन -1 कारण 0 जदि हबो तो मोर इंडिकेट कर दो फर्स्ट इंडेक्स को तो सेत पई -1 सेटा रहिबो जदि एम्प्टी अछि तो फॉन्ट इक्वल टू -1 रेयर इक्वल टू -1 to insert a request number you need to perform the following steps increment the value rare by 1 insert the element at index position rare in the array right तो रेयर टाकू मु इंक्रीमेंट करी तो -1 +1 इंक्रीमेंट करी माने +1 करी -1 +1 0 तो रेयर कोठी इंडिकेट हे गेला मोर 0 इंडेक्स नंबर एबे मु वैल्यू मु इंसर्ट कर परी right now I go to insert value in a queue implemented through array algorithm to insert value in a queue if the queue is empty set font equal to 0 increment rare by 1 increment karo store the element at index position rare in the array simple tomar algorithm right jodi mor prathame check karibi mor queue empty achi na kiछि value achi jodi empty achi set font equal to 0 right increment rare by 1 it means कोन प्रथम रु कंडीशन दिया आइथिबो माने दिया आइ मेंशन करा आइथिबो rare equal to -1 font equal to -1 राइट जदि क्यू मोर एम्प्टी अछि फॉन्ट को मते 0 बोली असाइन करो तापरे rare को इंक्रीमेंट करो तो rare पोजीशन रे इंडेक्स नंबर उडा माने वैल्यू उडा को इंसर्ट करो क्लियर
Let us now insert a request number in the following queue. So initially font equal to -1, rare equal to -1. Hello? Request number generated 3. If the queue is empty, ebe queue moro empty achi, set font equal to 0, font moro 0 ko assign hegala, increment rare by 1, 1 increment kale 0 ko assign hegala, store the element at index position rare in the array. So 3 assign hegala. Then again insertion complete. Then request number generated out gote number tomar generate karibo 5 suppose 5 taku insert karibo. So ebe if the queue is empty, ebe queue empty nahi, so jump karibo kouthe tomar second point taku increment rare by 1 increment kala, then store value at in position in the rare end. So position press kala, so eita tomar insert hei jibo. Eta bujhilo isida? Yes sir, ବୁଝିଗଲା। Insertion complete. The request store in the queue are served on a fast come fast service basis. As the requests are being served, the corresponding request number needs to be deleted from the queue. Write an algorithm to delete an element from a queue implemented through array. Right? Array re mate queue concept through mate element taku delete karibar achi. Algorithm to delete an element from a queue, retrieve the element at index font, increment font by 1. Right? Simple. Data point. Let us see how requests are deleted from the queue once the get proceeded. Retrieve the element at index font, retrieve kadala, increment font by 1. Then again say omit karibo, then delete karibo. Hala? Bujhila ida? Yes sir. Next, to implement an array, to implement an insert or delete operation, you need to increment the value of rare or font by 1 respectively. However, these values are never decremented, right? Mu jodi rare taku rare re jodi mu value insert karibi, tale rare taku increment kari jibi, right? And jodi font through ru jodi mo delete karibar achi, to font taku bi increment kari jibi. To array re jodi moro index number achi, jemiti 80 moro, right? ei case re ମୁଁ କଣ ଡିଲିଟ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଫଣ୍ଟ ଟାକୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି କରି ଯାଉଛି, ତ ଯୋଉଠି ଡିଲିଟ ହେଇଗଲା ସେଠି ମୋର ଏମ୍ପ୍ଟି ସ୍ପେସ୍ ହେଇଗଲାନି, ତ ସେଇ ସ୍ପେସ ରେ ମୁଁ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁ ଇନସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ନୂଆ ଭ୍ୟାଲୁ ଇନସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତ ଫଣ୍ଟ ଟାକୁ ମୁଁ ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି କି? ସେମିତି ନାହିଁ, ରାଇଟ? ସେମିତି ମୋର ନାହିଁ, ମାନେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ରିଟ୍ରିଭ କଲି, ଯୋଉଠି ମେମୋରି ମୁଁ ଆଲୋକେସନ ଡିକ୍ଲାଇନ କରିଦେଲି, ତ ସେଇଟା ମୋର ୱେଷ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ହିସାବରେ ସେଟା ଗଲା, ସେ ସ୍ପେସ୍ ଟା ମୋର ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। तो सेई जिंसो को हमें केमिति ओवरकम करिबा, बुझला मो पॉइंट ता बुझला? Yes sir. As you delete element from the queue moves down the array. The disadvantage of this approach is that the storage space in the beginning is discrete and never used again. जोटा मु तुमको कहउथि। Consider the following queue: font equal to 3 and rare equal to 4, माने 3 position रे अछि and rare टा मोर 4th position रे अछि। Rare as at the last index position. Therefore, you cannot insert element in this queue even through there is space for them. कारण मु delete कर देछि, मोर space खाली अछि, but मु फिर भी insert कर परिम, कारण कोन पय rare टा मोर first last index position रे मोर अछि। तो मु आउ ताकू तो पुणी इंक्रीमेंट करी, पुणी आसपे इंक्रीमेंट करी माने केते 5 आसीबो, आ रेयर को मु डिक्रीमेंट करि परिबन, हला डिक्रीमेंट करी आसपरिबो। This means that all the initial vacant position go waste. How can you solve this problem? One way to solve this problem is to keep font always at the 0 index position. Refer to the following queue. Font more side roila. To maintain font at 0 index position, every delete operation would require you to shift all the succeeding element in the array 1 position left, right? Suppose मोर font टा एठी constant रखि देली, right? एई position रे,
तो मु 3 टाको डिलीट कर देली तो एटा मोर एम्प्टी स्पेस हेगला तो मु कोन करबी 5 टाको एठी कानिबी 7 टाको एठी कानिबी 10 टाको एठी आनिबी ताले मोर रेट टा मोर रहिला खाली जगह तापर मु रे मु वैल्यू इंसर्ट करी राइट एटा भी गोटे डिसएडवांटेज राइट मु मोर जदे एटा छोटो लिस्ट अछि बोली मु शिफ्ट करी करी देबी जदि मोर लंबा लिस्ट थिबो केते मु शिफ्ट करबी पुणी इंसर्ट करी राइट तो ता ऊपर भी हमें आसीबा let us implement a delete operation on the following queue suppose 3 मु डिलीट कली तापर 5 टाको शिफ्ट कली तापर 7 टाको शिफ्ट कली तापर 10 टाको शिफ्ट कली हला एबे advantage of this approach it enables you to utilize all the empty position in the array therefore unlike the previous case this there is no wastage space previous case to eta more far better कारण कोन पय एथरे मोर कोनोसी वेस्टेज स्पेस जाउन राइट कोनोसी स्पेस मोर वेस्ट होन मु स्पेस उडा फिल अप करछ काहे कि जे फॉन्ट टाको मु कांस्टेंट कर देली फर्स्ट इंडेक्स नंबर आ फर्स्ट इंडेक्स नंबर जते मु डिलीट करूची ताले मु जदि एम्प्टी स्पेस मिला मु शिफ्ट करूची मो डाटा टाको शिफ्ट करची वन लेफ्ट हिसाब रे राइट तो मते फोन थे रेयर एंड मिल गला तो रेयर एंड रे मु इंसर्ट कर परी बट एटा भी मोर परफेक्ट नो डिसएडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच every delete operation requires you to shift all the succeeding element in the queue one position left if the list is lengthy this can be very time consuming an effective way to solve this problem is to implement the queue in the form of circular array right जदि मो array टाको circular array हिसाब ट्रीट कर देबी तो मोर इंक्रीमेंट हे जिवो मोर कोनोसी वेस्टेज स्पेस होबो नै In this approach, if rare is at the last index position and if there is space in the beginning of an array, then you can set the value of rare to 0 and start inserting element from the beginning, right? So then the circular link list thila last index position tomor indicate kariyo first index position ko to semiti mor circular array jodi mu thibi rare jodi mor last index position re bi jodi rahila bi to se link hei paribo phone thare again beginning ru लिंक है तो एटा कंप्लीट सर्किल हिसाब रे रहला तो एथे मोर वेस्ट होबार नै आ मु मोर वैल्यू डा को भी शिफ्ट करिवार किछि नै जेमते एठी insert 5 जदि मते रेयर टा को मु फोन थारे सर्किल बिगिनिंग को आन देली तो रेयर इक्वल टू 0 इंसर्ट कर पाली the cell in the array are treated as if they are arranged in a ring order एटा होची मोर रिंग ऑर्डर राइट तो एठी मोर कोठी एंड अछि कि एंड नै तो सर्कुलर अछि तो मु जो जो पोजीशन गले इंक्रीमेंट करले भी मोर स्पेस मते मिली परिबो बुझला write an algorithm to insert value in a queue implemented as a circular array eta hoje mora queue it let us now implement a few insert operation on the following circular queue request number is generated suppose 15 will be request number the queue is empty moro queue nahi to jump karibo kothi moro second point ku if rare is at the last index position rare ta moro last index position re bi nahi to increment rare by 1 increment kala then moro element ta rare re moro rakhila then insertion complete then out a value mu generate kochi 17 right एबे क्यू एम्प्टी नाही तो जंप करियो कोठी मोर सेकंड पॉइंट को इफ रेयर इज एट द लास्ट इंडेक्स पोजीशन यस रेयर इज एट द लास्ट इंडेक्स पोजीशन सेट रेयर इक्वल टू 0 तो रेयर कोठी आसला 0 को गो टू स्टेप 4 को आसीगला राइट एबे मोर एलिमेंट आसे नै परिबो 17 क्लियर इसिता यस सर इंसर्शन कंप्लीट request number is generated 25 ebe mate mor ye throw karibo if the rare at the last index position nahi increment rare by 1 rare cannot be incremented because the queue is full inserting an element in a full queue leads to queue overflow when the stack overflow before implementing an insert operation you should always check for the queue full condition. The condition for queue full are as follows.
if font equal to 0 and rare is at the last index position, or if font equal to rare plus 1 दीटा भितर मु जदि गोटे कंडीशन को यूज करी सेटा से चेक करिवो जे rare मोर क्यू टा मोर फुल अछि ना किछि एम्प्टी स्पेस अछि. Modified the algorithm for inserting an element in a circular array. प्रथमे चेक करिवो राइट. प्रथमे एटा मोर चेक करूची एठी. If the queue is full, display queue overflow, right? तो ए queue full पाई मोर कंडीशन टा कोन थिला एटा font equal to 0 and rare is at the last index position, or if font equal to rare plus 1 एटा ए कंडीशन टा मु कोठी देबी एई एल्गोरिथम रे मु देबी, right? If the queue is full, display queue is overflow exit, then मोर normal. खाली एई गोटे मते चेक करियर अछि प्रथमे जेता मु queue रे वैल्यू इंसर्ट करी प्रथम मते चेक करिवार अछि queue मोर फुल अछि ना किछि एम्प्टी स्पेस अछि. Now let us implement a delete operation on a queue implemented in the form of a circular array. To delete an element, you need to increment the value of font by 1. This is same as that of linear queue. However, if the element to be deleted is present at the last index position, then the value font is reset to 0. If there is only one element present in the queue, then the value of font and rare is set to -1, right? Write an algorithm to implement delete operation in a queue implemented as a circular array. Delete operation, seta insert thila. Algorithm to delete an element from a circular array. One request proceed. Suppose if there is one element in the queue, more one element nahi more queue re, so if font is at the last index position nahi, set font equal to 0 exit. font 0 assign कर दला exit हे गला. Then deletion complete. One request generated phone thare. If the rare is only one element in the queue, if font at the last index position nahi, then increment font by 1. Increment kala seta delete हे गला, right? हां सर एटा टिके आउथरे बुझे दियंतो एटा बुझ देखा delete operation, right? delete operation रे प्रथमे चेक करिवार अछि कि मोर क्यू एम्प्टी अछि ना किछि वैल्यू अछि. से एम्प्टी अछि जदि मोर कोन रहिबा दरकार सेट फॉन्ट इक्वल टू -1 सेट रेयर इक्वल टू -1. जदि एटा मोर अछि ताले मोर क्यू एम्प्टी अछि, राइट? जदि एटा मोर नाही मींस मोर फॉन्ट ता लास्ट इंडेक्स पोजीशन रे अछि कि जोटा कि मोर एटा, राइट? इफ फॉन्ट इज एट द लास्ट इंडेक्स पोजीशन, यस मोर फॉन्ट ता कोठी अछि लास्ट इंडेक्स पोजीशन रे अछि. तो सेट फॉन्ट इक्वल टू 0, तो फॉन्ट टा को 0 मु दे दी. तो फॉन्ट टा कोठी आसीला एठी आसीला. तो एटा मोर डिलीट हेगला कारण कोन पई डिलीट मोर कोठी हुए फॉन्ट एंड, तो मोर डिलीट हेगला. बुझला एग्जिट हेगला से. सर 2 और 3 पोजीशन रे तो किछि वैल्यू नाही नाही सेटा से कहून, राइट? से तमरो होई थई पारे आरे जेते पास करूछो सेते जे सब तक वैल्यू तमरो आरे इंडेक्स नंबर रे थिबो बोले किछि माने अछि, किछि एम्प्टी स्पेस थिबो, राइट? सेटा सेइथि पई से प्रथमे चेक कला. सेइथि पई प्रथमे से चेक कला क्यू मोर किछि वैल्यू अछि ना किछि वैल्यू नाही. तो फॉन्ट रे निहाती मोर वैल्यू अछि, राइट? फॉन्ट मोर इनिशियली मोर एठी अछि निहाती वैल्यू अछि. तो मोर कोडी जंप कला से तळु जंप कल टू सेकंड नंबर उ जंप कला. तो इफ फॉन्ट इज एट द लास्ट इंडेक्स पोजीशन, यस, तो मोर सेट फॉन्ट इक्वल टू 0 एग्जिट हेगला. एबे जदि मु फॉन्ट रे फुन थरे मु इंक्रीमेंट करिवि इंक्रीमेंट फॉन्ट बाय 1, राइट? तो फॉन्ट मोर इंक्रीमेंट हेगला. तो फॉन्ट इंक्रीमेंट हेगला माने फॉन्ट जोडी थिला सेठु डिलीट कर दला, सेठी वैल्यू टा को डिलीट कर दला. एबे मोर लास्ट पोजीशन, तो लास्ट पोजीशन रे सेट फॉन्ट इक्वल टू -1 सेट रेयर इक्वल टू -1 एग्जिट. कारण एई पोजीशन टा मोर कोन कहूची इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द क्यू, यस एबे मोर रेयर आउ फॉन्ट गोटे जगह रे अछंती माने वन एलिमेंट अछंती. तो सेट फॉन्ट इक्वल टू -1 सेट रेयर इक्वल टू -1 हे गला मोर एम्प्टी हे गला. एबे मु इंसर्ट कर करी. बुझला? यस सर. बुझला ना बुझलानी डाउट अछि?
डाउट रही वाला कि जे केमते मतलब लास्ट लास्ट रे जो हां को ना आथा रिपीट कर देते ना ठीक देखो मते जेतले मु क्यू रे डिलीट करछि क्यू रे डिलीट करछि माने कोन एटा सर्कुलर क्यू राइट एटा सर्कुलर आरे रे मु जेतले डिलीट करछि सेटा कोन मोर सर्कल ता कोन रिंग टाइप रो अछि राइट एबे मो रेयर रे मु इंक्रीमेंट करी करी जाउछि फॉर एग्जांपल मो रेयर रे किछि पार्ट मु इंसर्ट करिन जेमिति एठी मोर अछि राइट एटा मोर अछि मु मझरे इंसर्ट करनी सेटा मो प्रॉब्लम राइट माने डिलीट करिया ପାଇଁ कुआ गला तो प्रथे मु चेक करबी मोर फॉन्ट ता सेही लिस्ट रे गोटी एलिमेंट अछि कि फॉन्ट रे मोर गोटी एलिमेंट अछि कि मोर लिस्ट रे गोटी एलिमेंट अछि कि क्यू रे मोर गोटी एलिमेंट अछि कि नाही एठी गोटी एलिमेंट मोर देन वन एलिमेंट अछि तो से जंप कला सेट ପାଇଁ मोर 2 रे राइट इफ द फॉन्ट इज एट द लास्ट इंडेक्स पोजीशन चेक करिवो ता ପାଇଁ कंडीशन कि मोर फॉन्ट ता लास्ट इंडेक्स पोजीशन रे अछि कि जदि अछि ताले फॉन्ट टाको मते 0 को दे दो कारण एटा मोर सर्कुलर आरे राइट तो फॉन्ट टाको मोर 0 को पळे आसला 0 को जेतरा पळे आसला से डाटा टाको रिलीज कर दला एग्जिट हे गला तापर फोन मु फॉन्ट फोन थर जे मु डिलीट करी तो फॉन्ट टाको गोटे इंक्रीमेंट कर दियो गोटे इंक्रीमेंट कर दो माने ए जो डाटा जो अछि जोडी थिला सेटा को डिलीट कर दला डिलीट कला परे तापर एबे चेक करिवो जे मोर फॉन्ट ता मोर क्यू रे गोटे एलिमेंट अछि कि यस एबे गोटे एलिमेंट अछि तो फॉन्ट टाको -1 कर दला रेड टाको -1 कर दला तो सेही जो एलिमेंट ता सेटा डिलीट हे गला बुझला एबे देखो जदि मोर धरो थाए ना तमर कौन से पार्टी को जाउछ जदि ठीक अछि कौन से रिसेप्शन पार्टी हो मैरिज पार्टी हो थाए ना तमर वेज आ नॉन वेज राइट गोटोडे जगह रे मरा आइथिबो वेज ए एरिया टा नॉन वेज टा सेही एरिया टा आ गोटोडे जगह रे एमिति भी गां गळी रे हुए वेज नॉन वेज गोटे जगह रे रहे जार खाइबार इच्छा अछि से वेज खाइबो जार खाइबार इच्छा नाही से नॉन वेज खाइबो अरे जार नॉन वेज रे इच्छा से नॉन वेज खाइबो बट लोको सेठी थांती राइट बाढ़ीबा पई माने बफे रे बाढ़ीबा पई सर्व करिया पई तो एबे मते को जे जेतिक सब लाइन रे अछंती सेगुडा सब कोन नॉन वेज खाइबे नाही सेथिरो किए वेज खाइ पारे कि नॉन वेज खाइ पारे डिटो सेमती आरे रे मु सबुतक इंडेक्स नंबर रे वैल्यू पास करी बोली कोठी लेखा हिची कोठी लेखा है कौन से बुक रे भी पाइबन राइट तो मु धरो पांचटा वैल्यू मु पास करछि राइट पांचटा मु माने गैप रखी रखी पास करछि तो सेही अनुसार मते कोडिंग ता दबार अछि से जो कोडिंग ता दियाबो सेटा एटा से कोडिंग ता केमिति मु ताऊ इंडिविजुअल इंडेक्स को सर्च कर परिबेनी कोठी वैल्यू अछि कोठी वैल्यू नाही कोठी अछि कोन अछि तो मु कोन कली सेति पे दीटा वेरिएबल डिक्लेयर कली गोटे अछि रेयर आ गोटे अछि फॉन्ट तो क्यू रे डिलीट हबो कोठी फॉन्ट रे तो फॉन्ट जोठी असाइन हेची सेटा को मु धरि तो फॉन्ट जोठी होची से मिडिल रे थाउ लास्ट रे थाउ कि स्टार्टिंग रे थाउ राइट तो मते सेमति लॉजिक लिखिबार अछि तो की फॉन्ट कोठी अछि फॉन्ट जोठी अछि मु सेटा को धरि सेटा को डिलीट कर दे देन फॉन्ट टा को मु नेक्स्ट इंडेक्स को असाइन कर दे ता पई होची एई पोजीशन बुझला एबे यस सर क्लियर बुझला ना फिर भी किसी डाउट अछि ना बुझी गले करो at this stage if you try to implement a delete operation it will result q in q underflow जेता लिस्ट जेता सब तक वैल्यू मोर डिलीट हे गला डिलीट हैला पर मोर कोन आसु जे क्यू मोर एम्प्टी हे जेची एबे मु जदी मोर जे रिक्वेस्ट जनरेट हो डिलीट करो कहि केम डिलीट करो क्यू तो एम्प्टी अछि तो प्रथम मते चेक करिवार अछि कि क्यू मोर क्यू रे किछि वैल्यू अछि ना एम्प्टी अछि तो देयरफॉर बिफोर implementing a delete operation you first need to check whether the queue is empty or not the condition for queue empty is font equal to -1 right font equal to -1 जदी अछि ताले मोर queue मोर empty अछि modified algorithm for deleting an element from an circular queue खाली फर्स्ट पॉइंट ता मोर अछि एठी if queue is empty माने font equal to -1 जदी अछि ताले
से डिस्प्ले हम क्यू इज अंडर फ्लो माने क्यू रे किछि नाही राइट आ डिलीट कर परिबन नेक्स्ट तमरो सेम पॉइंट उडा खाली मते चेक करियर अछि क्यू मोर एम्प्टी अछि ना फुल अछि बुझला यस सर What is the advantage of implementing a queue in the form of a circular array instead of a linear array structure? If you implement a queue in the form of a linear array, you can add elements only in the successive index position. However, when you reach the end point of the queue, you cannot start inserting element from the beginning, even if there is a space from them at the beginning end. You can overcome this disadvantage by implementing a queue in the form of a circular array. In this case, you can keep inserting elements till all the index positions are filled. Hence, it solves the problem of uninitialized space, right? Or unutilized space. बुझला linear array रे जदि space अछि तले rare जदि मोर last index position अछि मते आउ increment करी हबन right स्पेस गुडा मोर एम्प्टी स्पेस गुडा मोर वेस्ट कला सर्कुलर आरे रे रेयर जदि मोर लास्ट इंडेक्स पोजीशन रे अछि जदि बिगिनिंग रे मोर किछि स्पेस खाली अछि रेयर टाको इंक्रीमेंट करते तो रिंग टाइप रो सेटा काम करे बुझला तो स्पेस सर्कुलर आरे रे मोर स्पेस टा वेस्ट जाय यस सर problem statement write a program to implement insert and delete operation on a queue implemented in the form of a circular array. What is the disadvantage of implementing a queue is an array? Same jinsa कहला. To implement a queue using an array, you must know the maximum number of elements in the queue in advance. To solve this problem, you should implement the queue in the form of a linked list. To keep track of the rare and font position, you need to declare two variables or pointers, rare and font, that will always point to the rare and font end of the queue respectively. It's our linked list, rare and font declare hela. If the queue is empty, rare and font point to the null. Sethi array re moro -1 dia utla. Ethi null. Ethi -1. Write an algorithm to implement insert operation in a linked list. Algorithm to insert an element in a linked queue. Suppose initially the queue is empty, rare equal to null and font equal to null. Jadi mora queue empty achi. Linked list re. Request number is generated 3. Allocate the memory of the new node. Assign the value to the data field of the new node. Make the next field of the new node point to the null. Null assign hegala. Then if the queue is empty, execute the following steps. Make font point to the new node. Make rare point to the new node. Exit. Exit hegala. Insertion complete. Then another request will be generated. Allocate the memory of the new node. Assign the data field of the new node. Make the next field of the new node point to the null. If the queue is empty, ebe eta execute haboni. कारण क्यू रे एबे किछि वैल्यू अछि तो स्टेप जंप करियो कोठी 5th पोजीशन को मेक द नेक्स्ट फील्ड ऑफ द रेयर पॉइंट टू द न्यू नोड नेक्स्ट फील्ड ऑफ द रेयर माने एटा पॉइंट करियो कोठी न्यू नोड पॉइंटिंग करतला मेक रेयर पॉइंट टू द न्यू नोड आसीगला एमति तमर इंसर्ट हे जेबो बुझला यस सर Write an algorithm to implement the delete operation on a linked queue. Algorithm to implement delete operation in a linked queue. Good minute is it? Hello. Amrika को. अच्छा हो ठीक है सर. Sorry, Isra. Algorithm to implement delete operation on a linked queue, right? Delete operation. Delete a कोठे वो content. One request proceed. If the queue is empty, font equal to null. Queue मोरो empty नहीं.
तो जंप करिवो कोठी 2 पॉइंट को मेक द नोड मार्क्ड font as current make font point to the next node in its sequence release the memory to the current node बुझला एमती तुम करंट डिलीट हो जीवो क्लियर है सीधा Yes, sir. how does the implementation of a linked list differ from that of our linked queue? A linked list you can insert and delete element anywhere in the list. However, in a linked queue, insert and deletion takes place only from the ends. More specifically, insertion takes place at the rear end and deletion takes place at the front end. एटा होची तमरो डिफरेंस लिंक लिस्ट आउ लिंक्ड क्यू भितरे कोन डिफरेंस लिंक लिस्ट रे मु मन इच्छा जोटी पाले सेठी मु इंसर्ट करि परिबी जोटी पाले सेठी मु डिलीट करि परिबी बट लिंक्ड क्यू रे दीटा गोटे एंड रे ही इंसर्ट करि परिबी आ गोटे एंड रे ही मोर डिलीट करि परिबी रेयर एंड रे मु इंसर्ट करि परिबी फ्रंट एंड रे मु डिलीट करि एटा होची डिफरेंस तार किसी एप्लीकेशन देला से queues offer a lot of practical applications such as printer spooling, CPU scheduling, mail service, keyboard buffering, elevator एगुडा सब तमरो सिस्टम वाइज माने सिस्टम रो एप्लीकेशन रे क्यू इंप्लीमेंट कराई ए सब ये प्रिंटर स्पूलिंग प्रिंटर रे जो जो रिक्वेस्ट तुम प्रिंट देथिबो धर तुम गोटे प्रिंट देलो प्रिंट हेलानी पुनी आ गोटे प्रिंट देदेलो पुनी आ गोटे प्रिंट देदेलो तो तमर कोन केमिति से प्रिंट करिवो जोटा फास्ट रे देइथलो प्रिंट सेटा को प्रथमे प्रिंट डिस्पोज करिवो देन सेकंड प्रिंट को डिस्पोज करिवो देन थर्ड प्रिंट को डिस्पोज करिवो सीपीयू शेड्यूलिंग भी सेम जिंस मेल सर्विस भी सेम जिंस कीबोर्ड बफरिंग भी सेम जिंस देखिबो बेले बेले तमे टाइप क्लास मोर टाइप हो नथो बट टिकी समय पर देखिबो से ऑटोमेटिक तमरो टाइप हो जाउतो जेमि पासवर्ड हो बहुत जगह रे एमती हुए वेबसाइट मान करे तुम टाइप करूच पासवर्ड टा मोर प्रिंट आसुन माने प्रिंट होउन से डिस्प्ले होउन बट जदर टिके समय रहि जिवो पासवर्ड टा ऑटोमेटिक पळाइतो बट जत ऑटोमेटिक आसीबो सेतर टिके ध्यान देकी देखिबो से सीक्वेंशियली केमिति आसुची माने जोटा फास्ट देइचो सेटा प्रथमे आसीबो तापरे 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 हेकी तमरो पूरा पासवर्ड टा तमरो रिटर्न हो बुझला Yes, sir. सर एलिवेटर ता कोन एलिवेटर टा होची तमरो कोन कहलो गोटे टाइप रो माने जेमती कोनते ना कोन मशीन टाइप रो गोटे जोथरे कि तमरो लाइट अप एंड डाउन जोटा हुए राइट अप एंड डाउन पोजीशन रे जोटा से जोटा तमे धर तमरो तम घर रो पांचटा रूम अछि राइट पांचटा रूम रे पांचटा फेज लागि राइट एबे जदि गोटे फेज जदि मोर ऑफ हो जाउची तो बाकी चारटा जाको चालुची राइट एबे जदि मते जदि सेही गोटे फेज जोटा ऑफ हो जाई ताकू जे रिपेयर करिवार अछि मते मशीन रु ऑफ करिवार अछि एतर ऑफ करूची सेते बेले एट ए टाइम सब आसु गोटे 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 आसुची जोटा प्रथम फेज अछि सेटा प्रथम आसीबो तापर सेकंड फेज आसीबो तापर थर्ड फेज आसीबो बेस्ट एग्जांपल होची तम सिस्टम राइट तो सिस्टम रे कोन जेता ऑन करूचो ऑन कोठी करूचो प्रथमे मोर इलेक्ट्रिक बोर्ड रे ऑन हबा दरकार इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑन हला परे तापर तम सीपीयू बटन टा को ऑन करछो माने सॉफ्टवेयर जो बटन टा को ऑन करछो जे सेटा ऑन करूचो प्रथमे कोठी तमरो पावर आसे प्रथमे पावर आसीबो तमरो माउस को राइट ए माउस को तमरो पावर आसीबो देन पावर आसीबो कोठी तमरो कीबोर्ड लाइट जळिबो देन पावर आसीबो कोठी तमरो मॉनिटर को एटा होची तमरो सीक्वेंशियल एकु कजे एलिवेटर बुझला यस सर से सब डिस्क्रिप्शन सब देइछि हला म एटा पठे देबी जेतरे पढि दबो खाली खाली जानिया पे नॉलेज जानिया पे ओके सर हासिंग टा हमें नेक्स्ट क्लास पढिबो ठीक अछि अच्छा इसिता तमरो से जो एड्रेस टा सेटा करेक्ट अछि तो जो एड्रेस टा सर जोटा देइथिले सेटा करेक्ट अछि तो
तो मु मंडे दिन डाटा स्ट्रक्चर बुक तुम से एड्रेस से मु कोरियर करी मतलब बुक अच्छी मो पाखे तो सेटा मु तुमको कोरियर कर दे अच्छा रिटर्न केमती करी रिटर्न नहीं सेटा तुम पई तुमको कोरियर दउची तुम रिटर्न करियो मत हला सेटा तुम रेफरेंस सेटा तुम रेफरेंस पई से बुक रे जोटा कि मु प्रिफर करे सेटा से बुक रे सब जिंस अछि हला माने मु जहा पढौची तुमको माने स्लाइड जहा अछि प्लस प्रोग्राम भी अच्छी से राइट माने से प्रोग्राम टा तुम हटात ना देखले टिकना को माने कंफ्यूजन टाइप रहबो बट जतले मु तुमको प्रोग्राम टा बुझे देबी तो तुमको देखले बहुत इजी लागी राइट से प्रोग्राम भी सब तुम से बुक रे अच्छी तो से माने मु मंडे दिन सेटा मु तुमको कोरियर करी बुझला गोटे रेफरेंस पाई तुम पाखर वेलकम वेलकम हला आउ सी सी प्लस प्लस कोन बुक दरकार की ना अच्छी तुम पाखरे ना सर मुझे पचारिया में चाहूँ कौन बुक किनले भल हम किसी माने किन तो नहीं बट पचारि थांती हमर जने सर जे कि पढौचंती ओ माने सी प्लस प्लस से गोटे कोनटा देइथिले बोलते मु किनिमिनी तांकर से जा पढौचन माने इति बुझी आसनी मास्टर ठीक अछि तुम किनिया दरकार नै क्लियर हेछि ना सर सचले तांकर माने न बुझिले भी से प्रोग्राम जो करे दउछन बुझी आ जाउछ नहीं से ठीक अछि तुम किनिया दरकार नै मु सी सी प्लस प्लस बुक भी तुमको से धीरे कोरियर कर दे हला सर आपनकर एते खाते नहीं मते रेफर कर दियंते मु नाले किनी आनी भी एका कथा मु डीएसटी बुक ता तुमको पठेबी और सेही खाम रे तो आउ दुटा बही तो पूरे देबी ना आउ कोन एका एक्स्ट्रा खर्चटा जाउची खर्च पाई केबे भी नहीं सुनो सुनो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन पाई मो संग टोटली कथा हबो हला मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मु तुमको मो तरफ रो मु तुमको कहूची मु माने पाठ पढ़ा पाई कंप्रोमाइज किछि नहीं राइट एजुकेशन सेक्टर रे मो पाई आउ कि थिबो कोन थिबो मु सेटा कहि पानी मो पाई जे भलो पढिला मु ता पछरे लागिल बुझला तो पाठ पढ़ा पाई कंप्रोमाइज न पैसा के आज केते अछि केते जाईची केते ठिकाना नहीं हला तो मु जदी इंटरेस्ट होउची जदी जदी मु तुमको दउची जदी डीएसटी बही देई परछि ताले सी सी प्लस काई न दे करी बुझला तो बाहर किनिबा अपेक्षा मु तो पठे दउची से सेही खाम रे तो जिवो से खाम रे सी सी प्लस से पाइची बुझला थैंक यू सर वेलकम तो हासिंग टा हमें नेक्स्ट क्लास पढिबो देला जदि आउ किछि भी किछि रिक्वायरमेंट जदि थिबो ताले कहिबो मते ठीक अछि जदि अलगा किछि माने अलगा कोनसी टॉपिक ऊपर हो कि कोन ये अछि तो निश्चय मो द्वारा जदि संभव पर थिबो ताले मु निश्चय हेल्प करी ताले मु निश्चय गाइड करी ओके सर ओके हासिंग टा हमें नेक्स्ट पढिबा माने काल तो हमें माने ये करबा प्रोग्राम करबा तो हासिंग हमें प्रोग्राम पर करबा हला आ तो अल्प अछि पर करबा ठीक अछि यस सर ओके थैंक यू इसिता मु काली रो वीडियो भी आज अपलोड कर दोचे आज मु दे दोची काली रो वीडियो और आज रो वीडियो ओके ओके